ओके। नमस्कार ओडिशा ओडिया शिखिबा आपको स्वागत है अगेन B.Ed Entrance 2026 जियोग्राफी क्लास नेचुरल रिसोर्सेस यूनिट 4 पार्ट 5 को आपको स्वागत अगेन इंपोर्टेंट जियोग्राफी एमसीक्यूज पार्ट 5 रे जोंटी अगेन 50 मार्क रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करिबा जो गुडी को पर आवश्यकता निश्चित भाव रही स्टार्ट करिबा जो टॉपिक समस्त ऑडियो क्लियर आसुची सर टिके कंफर्म कर दे पले ऑडियो समस्त क्लियर आसुची पले टिके कंफर्म कर दियो कंफर्म कर दियो पले टिके स्टार्ट करिया पले ठीक अच्छे आशा करूँ समस्त पाखे ऑडियो पहुंची पारुथिबो ठीक अच्छे स्टार्ट करिबा आज टॉपिक अगेन ओडिया शिखिबा आपनको स्वागत पार्ट 5 नेचुरल रिसोर्सेस आपनको समस्त स्वागत ओके क्वेश्चन समस्त को विजिबल हम कि नहीं टिके कंफर्म कर पे माने क्वेश्चन समस्त को विजिबल कि नहीं ओके आशा करूँ समस्त ऑडियो ठीक से पहुंची पारुथिबो जदि पहुंची पारुछि ठीक क्लियर लिखि दियो बुझी जीवी जे ऑडियो क्लियर आसुछि बोली ना बफरिंग होउछि जाय मते टिके कंफर्म करत पले मैं जानि छी आज नेटवर्क इशू रहिबो ह्यूमिडिटी ए लेवल अछि कि कहा को भी निदा लागु न थय ठीक अछि स्टार्ट करबा जो क्लासेस से कहला crude petroleum normal reservoirs and active traps in India are geologically confined to rock formation of which specific period भारत रे अशोधित पेट्रोलियम एवं सक्रिय ट्राप गुड़िक भौगोलिक भाव क्यों सुनिर्दिष्ट जुगर शिला संरचना सीमित रही प्री कैम्ब्रियन पीरियड ठीक है ओके एबे समस्त देखा तो क्लियरली बुझी पारो तो गोंडवाना पीरियड टेरिटरी पीरियड सेटासियस पीरियड क्वेश्चन नंबर 1 रे मैच स्टार्ट करले हमर जर्नी टेरिटरी पीरियड इज द परफेक्ट आंसर ठीक है परफेक्ट से कहला जे crude petroleum in India occurs almost exclusively in the sedimentary rock formation of the टेरिटरी पीरियड ना नहीं भारत रे अशोधित पेट्रोलियम मुख्यतः टेरिटरी जुगर अवस्थित शिला संरचना मिलता है सिगा being lighter than groundwater crude petroleum pores systematically accumulate within which structural geological features भूतल जल अपेक्षा हालुका होइतिबारु अशोधित पेट्रोलियम मुख्यतः क्यों प्रकार भौगोलिक संरचना मध्य संचित होता है सिंक्लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल बेड्स एंटीक्लाइन्स और फॉल्ट ट्रैप्स मेटामॉर्फिक डाइक्स वोल्केनिक क्रेटर्स क्वेश्चन नंबर 2 जाना है बाकी समझ आंसर दे दियो
बहुत बढ़िया से गला एंटी साइलेंस ऑफ fall traps है ना नहीं so being lighter than water petroleum droplets migrate upward and collect within anti-silence structural fall traps above the water surface जल अपेक्षा हालुका होइतबर पेट्रोलियम ऊपर को गति करी जल पृष्ठर ऊपर एंटीक्लाइन किंबा च्युति ट्रैप fall traps मध्य संचित हुए ओके ठीक अछि परवर्ती प्रश्न बुझबा से कहला which environmental maker is traditionally taken by drilling geologists as primary indication of fundamental oil occurrences भूतले तैलर अवस्थिति जानिबा पई खननकारी भूविज्ञानी माने प्राथमिक संकेत भाबे क्यों परिवेशगत लक्षण को ग्रहण करंती हेवी कोल टा डिपोजिट्स नेचुरल गैस सीपेज हाई सल्फर कंसंट्रेशन basaltic rock intrusions प्रणाम प्रणाम प्रकाश प्रणाम समस्त आंसर दे दियो टिका जी नेटवर्क इशू अच्छी कौन करिवा नेचुरल गैस सीपेज इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ठीक है The gas usually occurs directly above the oil pool, meaning a natural gas seepage is taken as a reliable indicator of oil below. ठीक है Approximately what percentage of India's total crude oil production is harvested from offshore marine oil fields? भारतर मोट अंशोधित तैल उत्पादन प्राय केते प्रतिशत भाग समुद्र मध्य थिबा ऑफशोर तैल क्षेत्र संग्रह 27 35 65 82 क्वेश्चन नंबर 4 रे अछि बापा होउची कि पिले टिके कंफर्म करिवो तो से कथा होउची त मानु से तो ऑर्डर रो मते टिके कंफर्म करा ये भी ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 4 रे में अछि रुचि के ठीक तो चलो जी ओके एबे ऑडियो समस्त ठीक आछथि एबे आशा करू किसी इश्यू आस नथिबो समस्त कंफर्म कर दियो 4 नंबर रे अछि सी 65% इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया प्रति प्रश्न हो जैसे कहला अबाउट 65% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम ऑफशोर एरियाज लाइक मुंबई हाइट व्हाइल 35 इज ऑनशोर देशर मोट अर्जित तैल उत्पादन प्राय 65 भाग मुंबई हाई बड़ी सामुद्रिक ऑफशोर अंचल आस्ते एवं बाकी 35 स्थल भाग मिलता Which onshore field cluster forms a key part of the Brahmaputra Surma Valley oil production zone in Assam? हिमत मध्य क्यों तैल क्षेत्र गुड़िक आसाम ब्रह्मपुत्र सुरमा उपत्यका तैल उत्पादन अंचल एक मुख्य अंश अटे अंकलेश्वर एंड लुनेज दिग्बई नाहरकाटी एंड मोरन उग्रीजान कैलोल एंड मेसाना नरिमनम एंड तातीपक ओके ठीक अच्छे आंसर बीज द परफेक्ट दिग्बई एंड नारकाटिया एंड मोरन हार्वेस्ट द प्राइमरी oil fields of the Brahmaputra Valley
Digboi, Narkatia, Boran Grisan, and Rudasar. Perfect. So the prominent onshore oil wells of Ankleso, Karlol, Mehsana, and Navagam are located in which state? Rajasthan, Tamil Nadu, Assam, Gujarat. क्वेश्चन अच्छा रहा मैच. हाँ, बहुत बढ़िया. ओके, ठीक है. ଏବେ ସମସ୍ତେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ. ଡି ଗୁଜରାଟ ଇଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ଠିକ୍ ଅଛି. The major onshore fields are located in Gujarat, concentrated across the Bharuch, Mehsana, and Ahmedabad districts. देखो, perfect. पहला Narimanam and Koikalapalli. Okay, Koilkalapalli. Oil wells are essentially assets located within which specialized coastal sedimentary basin? Krishna Godavari basin, Kaveri onshore basin, Kambe offshore basin, जोड़ा कोचे महानदी डेल्टा बेसिन. क्वेश्चन नंबर 7 रे আছে. बहुत बढ़िया. 7 नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हबो कावेरी onshore basin. ठीक अछि. से कहला these fields are situated in Kaveri onshore basin along the east coastal areas of Tamil Nadu. Okay. According to the March 2019 resource records, which region hosts India's single largest estimated crude oil reserve? Assam onshore, Gujarat coastal plain, eastern offshore basin, western offshore basin. Question number 8 रे मैच. ठीक अच्छे. बहुत बढ़िया. जो मैंने आंसर दे दीच डी इज द परफेक्ट आंसर. से कही वेस्टर्न ऑफशोर रीजन ना कौन. बहुत बढ़िया. The western offshore area holds the largest crude reserve in India, 239.20 million metric tons, followed by Assam. In the onshore petroleum products and metric of 2019, which state ranked first by extracting 5,200,000 tons of crude? Assam, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu. Question number 9. C. Rajasthan is the perfect answer. So, the Rajasthan led onshore production in 2019 with 5,000 tons, outperforming Gujarat and Assam. Okay. So, thus refineries situated right at the extraction site to minimize bulk transport costs of crude oil are classified as what? Market-based refineries, captive industrial grades, oil field-based refineries, onshore terminal junctions. Question number 10. बहुत बढ़िया. Oil field waste refinery is the perfect answer. Refineries are divided into oil field waste located near the extraction site like Digboi and market waste like Barauni. देखो. Pranam. 60. Okay. So, which industrial asset is recognized as Asia's oldest operating oil refinery? Koyali refinery, Paradip refinery, Jamnagar refinery, Digboi refinery. Question number 11. Digboi refinery is the perfect answer. Digboi in Assam is Asia's oldest oil refinery and remains one of the oldest continuously operating refineries globally. The private sector Jamnagar refinery complex owned by RIL features what unique global status?
It is the highest altitude refinery in the world. It is the world's largest combined oil refining facility. It relies entirely on nuclear power generation. It processes only non-paraffin hydrocarbons. Question number 12. जय जगन्नाथ प्रणाम पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 भल से समस्त पढ़ पिले। It is the world's largest combined oil refining facilities. Na kon? And Reliance Industries Limited refinery complex at Jamnagar is famous because it is the largest oil refining hub in the world. Na kon? Owned by Reliance Industries Limited, location Jamnagar. Importance of world's largest combined refinery complex. ठीक है विश्व सर्वाधिक उच्चतार थिपा रिफाइनरी नुहे एटा नुह ठीक है B is the perfect. Arifil's twin 1.2 million BPD marketing it was largest combined refining facility. How many public sector refineries are actively operated by the government within India's oil refining grid? 5 refineries, 12, 18, 23. Question 13 numbers. देखो पहले जदि मो ऑडियो तमन को आसुची सेति के एनफ मु होई तो तमन को चार्ट आज देखि परिबेनी गाना नेटवर्क इशू होउची तो मो बारंबार स्विच बैक करी जाई परिबे नाही ठीक अछि बोले मु कितो जानि छी तमने ठीक आंसर दउथिबो ठीक अछि जदि मु कोडी भूल करी मते चार्ट मेसेज करियो मझे मझे चार्ट देखिबो का आसुची ठीक अछि 18 is the perfect answer. India possesses a total of 33 oil refineries, out of which 14 operate in the public sector and 5 in the private sector. Bharat. Which major cross-country pipeline runs from a length of 2,660 km from Gujarat coast to North India? Paradip Haldia Baroni pipeline, Salaya Mathura pipeline, Mundra Panipat pipeline, Naharakatia Nunmati pipeline. क्वेश्चन 14 में बहुत बढ़िया 20 द परफेक्ट आंसर ना कौन सलाया मथुरा पाइपलाइन Salaya Mathura pipeline 2660 km long, running from Salaya near Vadinar in Gujarat to Mathura, UP. है ना नहीं Mundra Panipat hydrocarbon pipeline connects the coastal terminals of Gujarat to the inland refinery infrastructure of which state? सिकला उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा. 24 आंसर दी तो प्रश्न 15 में है. Okay, Haryana is the perfect answer. The Mundra Panipat pipeline measures 1194, running from Mundra on Gujarat coast to the Panipat refinery in Haryana. Crude petroleum oil contains complex chemical combination belonging primarily to which organic hydrocarbon series? Benzene aromatic series, paraffin series, acetylene unsaturated variants, alcohol and ester polymers lines. Question of short answer. This is the perfect answer. Paraffin series. देखो पहला crude petroleum consists of hydrocarbons including compounds belonging heavily to the paraffin series. देखो
Refined coal tar by products recovered from industrial coke ovens are chemically treated to manufacture what? Naphthalene, phenol, and benzene, paraffin wax and cosmetics, high grade cooking alcohol, nitric acid, nitric acid, and ammonia salts. Naphthalene, phenol, and benzene. Similarly, refined coal tar by products are specifically used to manufacture industrial chemicals like naphthalene, phenol, and benzene. Similarly, ammonia gas recovered from structural coke oven facilities serves as a core raw ingredient for making what? Synthetic rubber and nylon fibers, solvents, dyes, and plastics, nitric acid and agricultural fertilizers, aspirins, and industrial soaps. Question number 18 ठीक है क्वेश्चन 18 आंसर देलो बहुत बढ़िया सी इज द परफेक्ट आंसर ammonia gas recovered from coke ovens is used directly to produce ammonia salts nitric acid and agriculture fertilizers okay due to its strategic fuel value and highly diversified industrial uses coal is popularly designated as what black diamond liquid gold refractory element black ore acid question number 19 रे मैच क्वेश्चन नंबर 19 रे मैच बहुत बढ़िया ए ब्लैक डायमंड इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया आंसर only when you announce teacher in view of its vast importance as a mineral fuel and its highly varied chemical uses coal is called the black diamond okay which chemical fiber product can be successfully derived from coal and its industrial byproducts निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁଟି ଫାଇବର କୋଇଲା ଏବଂ ଏହାର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ କଟନ ଜୁଟ୍ ଫାଇବର୍ସ ରାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଲନ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ hemp polymers question number 20 रे मैच 20 नंबर डी केमती हो सी होबा कथा तो सी कोन हो मत को से कह बाल सपोर्ट निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁଟି ଫାଇବର କୋଇଲା ଏବଂ ଏହାର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ରେୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଲନ୍ କାହିଁକି ଡି କାହିଁକି ହବନି କହିଦଉଛି ଡି କଣ କହିଛି ଫ୍ଲାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେମ୍ପ ପଲିମର୍ସ फ्लैक्स एंड हेम्प पॉलीमर्स नेचुरल प्लांट्स ऑफ फाइबर हुए हाँ ना नहीं नेचुरल प्लांट आउ फाइबर हुए नेचुरल ना कि कृत्रिम ठीक अच्छे बुझिपाला जूट फाइबर तो हबनी कहीं से जूट प्लांट रू आसे फ्लेक्स एंड हेम्प हम कौन यहाँ हुए नेचुरल प्लांट फाइबर्स ओके ना जूट भी हबनी बा एक्सप्लेन कली जूट तो झोट प्लांट हुए chemical fibers such as rayon and nylon are derived synthetically from coal or coal products okay what long distance pipeline runs for 1152 km across northeastern states to feed market refineries salaya koyali mathura pipeline naharkatia nunmati baroni pipeline paradip haldia baroni pipeline bombay ankleshwar pipeline question number 21 रे मैच
Perfect. Narakatia, Nurmatia, and Baroni pipeline is the perfect answer. Narakatia, Nurmatia, and Baroni pipeline is 1,152 kilometer long, transporting crude oil from Assam to Bihar. In the public sector list of asset locations, Paradip refinery is operated inside which inside state? Question number 22. बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 22 कहार जमती भूल ना हो परफेक्ट ओडिशा इज द परफेक्ट Paradip is a major public sector refinery operated by oil refinery कोटा who oil refinery Paradip oil refinery कोटा इपको हैला सारो है नहीं ठीक है बहुत बढ़िया है ओके ठीक है परवर्ती प्रश्न को जीवा Sugar refinery is located near consumer hubs like and linked to oil fields via pipelines are termed उपभोक्ता केन्द्र गुड़िक निकट में अवस्थित एवं पाइपलाइन द्वारा तैल क्षेत्र सह संयुक्त होता विशोधनागार गुड़ी को कौन कहुए कैप्टिव फील्ड साइट्स प्योर डेल्टाइक टर्मिनल्स ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज ठीक अच्छे आंसर समय दे दियो 23 नंबर प्रश्न में अच्छे नहीं मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज हम ठीक अच्छे refineries located near consumers rather than oil sources are categorized as market based refineries like Baroni okay हाँ नहीं बुझी पालो based on 2018-19 data what was the total installed oil refining capacity of India in MMTPA केते 120 MMTPA 249 388 618 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर 24 रे आंसर सजेशन आंसर दियो एते अधिक नुह पिले माने एते अधिक नुह 24 रे एते अधिक नुह पिले 388 टिके कमे दियो 249 इज द परफेक्ट आंसर ठीक अच्छे सगला इंडिया टोटल ऑयल refining capacity amounted to 249 MMTPA million metric ton per annum MMTPA full form कोनटी लिखि दो के केदी लिखिया चाहते लिखि दियो million metric ton per annum केदी लिखिया चाहते लिखि दी परिबो ठीक अच्छे इंडिया रैंक्स 4th in international oil refining capacity positioned directly behind which country groups अंतर्जातीय तैल विशोधन क्षमता क्षेत्र में भारत चतुर्थ स्थान रे रही यार स्थान क्यों देश गुड़िक पचर आसता रशिया जर्मनी एंड जापान यूएसए चाइना एंड रूसिया चाइना ब्राजिल एंड सऊदी अरेबिया यूएसए कनाडा एंड यूके पच्चीस नंबर प्रश्न बहुत बड़े 20 द परफेक्ट आंसर प्रति प्रश्न बुझा USA, China, and Russia. India holds the 4th position globally in oil refining capacity after the USA, China, and Russia. ये बात natural gas और LNG energy consumption ठीक है natural gas is a naturally occurring hydrocarbon mixture consisting primarily of which specific compound propane, methane, butane, ethane क्वेश्चन 26 में बहुत बड़ा मीथेन इज द परफेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत फास्ट आंसर आसी बहुत बड़ा पिला नेचुरल गैस इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन ठीक है CH4 ना कौन द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन इंडिया आर मैनेज्ड बाय व्हिच कॉर्पोरेट एंटिटीज गेल एंड स्टील ONGC एंड ऑयल ONGC full form कौन oil and natural gas okay ठीक है NTPC and NHPC RIL and IOC क्वेश्चन 27 ONGC and oil is the perfect answer परवर्ती प्रश्न बुझ to transform natural gas into a liquefied
Natural gas LNG state for shipping, it must be cooled to what exact temperature? 0 degree F, 100 degree F, minus 260 degree F, minus 450 degree F. Question number 8 is match. बहुत बढ़िया 260 degree F. ठीक है. Natural gas must be cooled down to a liquid state at about 260 degree for F for shipping and compact storage. ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋତେ ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ OMR PDF ଦେଇଦେବି, ତମମାନେ ଏଯାଏଁ ମୋତେ ମେସେଜ କରିନାହ, ତଥାପି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଜଣ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ମେସେଜ କରିବ, ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇ ହେଉନି, ସମୟ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍। ତ ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ of natural gas in its liquid state LNG is compressed to be how many times smaller than its gaseous form? 100, 250, 400, 600 times smaller. Question number 29. Mm-hmm. 600 times smaller. ठीक है जी, 600 times smaller. The volume of natural gas in its liquid state is compressed to the about 600 times smaller than its gaseous form. देखो, which sector stands as the single largest consumer of natural gas in India, accounting for nearly 36% of total production? Electricity, power generation, fertilizer industry, domestic cooking fuel, steel manufacturing. Unanswers. Question number 30 remains. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है जी, मन रखो, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा, ठीक है जी। कहीं कहीं डाउट करिवे, सब यूनिक क्वेश्चन, रिपीटेड नु। सब यूनिक क्वेश्चन, कोट भी क्वेश्चन रिपीटेडली पाइबन तमन, सब यूनिक क्वेश्चन। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज बाय फार द लार्जेस्ट कंज्यूमर, using nearly 36% of the natural gas produced. Okay. So the industrial gas-based fertilizer plants mentioned in the text are actively located in which field clusters? Digbo and Naharkatia, Hajira, Dubai Seth, Vijaypur and Jagdishpur, Paradip and Haldia, Mumbai High and Basin. Question number 3. देखो पे मु पूर्वर भी कही कहूँ, जेहेतु मु एका निजे क्वेश्चन सब बनवा पड़ुची, तो बेले बेले विलम्ब हो जाउची। जदि टिके को दिन डेरी हो जाउची क्लासेस, केही भी माइंड करिवनी, केही भाबिबन जे क्लास होबनी बोली, काहे कि ना टिके निजे क्वेश्चन बने सबडू निजे हैंडल करवाटा भी एते सहज कथा न, ठीक अछि। को निजे सब किछ प्रिपेयर करबा पड़ुची, ठीक अछि। Major gas-based fertilizer plants operate in Hazira, Gujarat, Tabhasat, Maharashtra, Vijaypur, MP, and Jagdishpur, UP. So, according to the 2019 data records, India captures what percentage share of global primary energy consumption? 1.09%, 3.40%, 5.8%, 12.0%. That's the answer. ठीक है, that's the answer. तो 32 प्रश्न है, 5.8% is the perfect answer. India is the third biggest energy consumer globally, accounting for 5.8% share of the world total. Which out of the total primary energy consumption metrics of India in 2018, what percentage was fueled by crude oil? जोटा पे पेट्रोलियम प्राइस बढ़ी जाए ना, कौन पेट्रोल प्राइस बढ़ी 45.88%, 29.55%,
6.17%, 3.40%. जल्दी समझ आंसर तो क्वेश्चन 33 में আছে बहुत बड़ा 29.55% तो परफेक्ट आंसर. The primary consumption metrics for 2018 document coal at 45.88% and crude oil next at 29.55%. Okay. What was the exact percentage share of India's net imports of primary energy relative to its primary consumption in 2018? 20.66, 40.13, 42.00, 51.90%. Number 34. ठीक है समस्त आंसर दे दियो पहले क्वेश्चन 34 में 40.13% इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है बहुत बढ़िया. In 2018, India's net imports of primary energy formats stood at 46.13% of its total primary consumption. Traditional and established energy formats like coal, petroleum, and natural gas are classified under which category? Unconventional, conventional, inexhaustible flow elements, non-commercial waste format. Question number 37. Okay, ठीक है. परवर्ती प्रश्न को जीवा. B is the perfect answer. Conventional energy sources. Traditional sources of energy such as coal, petroleum, and natural gas are defined as conventional sources. Firewood, charcoal, dried cow dung, and animal power are collectively categorized as what? Commercial energy, non-commercial energy, conventional, modern resources, nuclear infrastructure assets. Question 36 में समझते भलो से चेक करो. से कुछ फायरवुड. फायरवुड माने कौन? फायरवुड कहले जेमती फायरवुड कहले जो निया लगा काठ जला हो जाळेनी काठ जोटा को जाळेनी काठ ओडिया रे फायरवुड जाळेनी काठ चारकोल जानिथिबो जो कोइला कोइला जो धळा कोइला अधा जळी काउ डंक माने जो गोबर घसी एनिमल पावर ये सब कौन ये सब आज नॉन कमर्शियल एनर्जी व्यवहार करा जाए. ठीक अच्छे बुझिपार कारण जाळेनी काठ कोइला सॉरी कोइला कहले चारकोल सुखिला गोबर बा घसी पशु शक्ति गुड़िक हूँ कौन पारंपरिक शक्ति उत्स गुड़िक बड़ परिमाण व्यावसायिक भाव क्रय विक्रय करा जाए नाही. आपको किए गण बुझिपार ये मॉडर्न रिसोर्सेस जीव तुम भावुच रिसोर्स गैस गुड़ाक सब. Approximately what percentage of India's total grid electricity generation is derived directly from fossil fuels? Mm-hmm. 80% is the perfect answer. Se kahila about 80% of India's electricity generation is derived from burning fossil waste, mostly koila. The government has set a progressive policy target to alter its gas mix. What is the target share for natural gas by 2030? 6.2%, 15%, 37%, 36%. So answer the question 38 में
এটা কি সি ହେଇଛି କି ପିଲେ? नहीं ठीक चलছে। अच्छा, B 15% is the perfect answer. So India plans to raise the share of natural gas in its total energy mix to 15% by 2030. Okay, up from the current 6.2%. As per, as per the 2020 power matrix, which sector is the largest domestic consumer of electricity using 42.69 of total residential consumption, agricultural operation, industrial sector, commercial hubs? Question 39 আছে। তো इसमें आंसर दे दो। ओके ठीक है, समस्त आंसर दियो। बहुत बढ़िया, इंडस्ट्रियल सेक्टर द परफेक्ट आंसर है ना? नहीं, industrial sector is the largest consumer of power in India, 42.69%, followed by the residential sector at 24.01%. What percentage of total energy production was lost during transmission and distribution infrastructure delivery in the 2019 financial records? Question number 40 किसी ने 40 जल्दी से आंसर दे दियो। ठीक है, आंसर सुन दे देलो। D is the perfect answer, 40%, 40.63%, due to logistical grid gaps, transmission and distribution losses for FY 2019 financial year जोटा गया FY ला financial year, ठीक है, stood at 20.60 of total production. Question number 40, D is the perfect answer. Natural gas cooled down to S टाको अवॉइड करा -260 डिग्री, इटा को भी एकड़ो को अवॉइड करा -260 डिग्री F इटा को अवॉइड करा, ठीक है, -260 डिग्री F features which characteristics, property, safety status, highly toxic and corrosive, इटा को अवॉइड करा। से टाइप करला बड़े कौन कलर डिग्री गुड़ा का सपोर्ट होनी। पॉन्केंट, smelling thick yellow liquid, odorless, colorless and non-toxic, chemically unstable at normal depth. Question number एक्सट्रा है। ठीक है, pungent, smelling thick yellow liquid. LNG is a clean hydrocarbon format that is inherently odorless, colorless, non-toxic and non-corrosive. India plans to expand its solar footprint under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission. What was the initial expansion target? 5,000 megawatt, 20,000, 45,000, 84,000. Question number 47. बहुत बढ़िया, B is the perfect answer, 40,000 megawatt. Okay, India initially targeted adding to 20,000 megawatt of solar energy to its grid capacity under this specialized national solar mission. Okay, ठीक है। Where is the unique solar plant utilized directly to sterilize milk cans located? क्वेश्चन नंबर 40 में है। बहुत बढ़िया, बी माधवपुर नियर भुज, गुजरात ना कौन? द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इट्स टाइप एट माधवपुर नियर भुज, गुजरात. इट्स स्पेसिफिकली used to sterilize milk cans ना कौन? Which statutory government agency is responsible for driving the infrastructural development of wind energy in India? 44 नंबर प्रश्न में আছে।
बहुत बढ़िया, ए इज द परफेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परफेक्ट। The Ministry of Non-Conventional Source of Energy holds statutory responsibility for developing wind systems. The unique renewable power facility located at Okla in Delhi converts water material into structural bioenergy. Heavy crop residues spent cooking or coking coal tar, municipal solid waste, offshore oil impurities. Question number 45. Municipal solid waste is the perfect answer बाबा, ठीक है। सिकला ओक्ला इन दिल्ली presents a practical example by producing clean bioenergy directly from municipal solid waste. The British colonial law created a separate category called unclassified forest, which captured what share of the total forest expanses? 53%, 29%, 18%, 4.9%, 47. 18% is the perfect answer. So, पहला unclassified forests made up of 18% of the total forest footprint during the British era, featuring no rigid public restriction. The total geographical landmass documented for the entire country of India is exactly what? 751, 328.75, 141, 80.20, क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में पहुंच रहे। $328.75 billion is million hectares, ना? Perfect. The land allocation matrix maps India's total physical geographical area at 328.75 million hectares, ना? Mountain relief features in India. Okay, mountain relief features in India perform a highly vital environmental role because they act as what? Storehouses of deep limestone layers, core catalyst for dry framing crops, perennial sources of fresh water and tourism triggers, primary sites for market refineries. बहुत बढ़िया, C is the perfect answer. Perennial sources of fresh water and tourism triggers. Okay. High mountain relief systems promote tourism, maintain eco balance, and serve as a perennial fresh water sources. Okay. So land resources dynamics left idle for more than 1 year but less than 5 agricultural years are classified as what? Current fallow, old fallow, cultivable waste, nor agricultural use plan. Question number 1. Old fallow land से कही उर्वरता फेराई आने गत 1 वर्षर अधिक किंतु 5 वर्षर कम समय धरी पतित पड़िथिबा चाष जमी को केउ श्रेणी रखा जाए? ओल्ड फैलो लैंड तक को, ठीक है। अनावधि गोचर जमी को कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कह जाए, जोटा सरकारी जमी जो गुड़ाक आम कौन गवर्नमेंट किंतु सेगुड़ा चाष योग्य किंतु से चाष हेउ नहीं, सेगुड़ा को कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कह जाए। Land left uncultivated for a duration matching 1 to 5 years is officially categorized as a old fallow land. Okay. आज शेष प्रश्न, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इको रीजन्स मैनेज ए मेगा डाइवर्स पूल ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज मेनली ड्यू टू क्रांतीय एवं उपक्रांतीय अंचल गुड़िक विशाल जैव विविधता बा
अधिक जीवंत प्रजाति देखाଯିबार मुख्य प्राकृतिक कारण कौन? Extensive deep bore well drilling grids, heavy industrial fertilizer synthesis setups, ample sunshine, warm temperatures, and high humidity, large numbers of market-based downstream refineries. Question 50 में আছে जल्दी से आंसर दे दो। शेष प्रश्न बहुत बढ़िया। ample sunshine, warm temperatures and high humidity, बहुत बढ़िया। greater sunshine, warm temperature and high humidity in tropical locations support a highly dense variety of species. ठीक अछि ओके आशा करूछि आउरी क्वेश्चन अछि हेले सेटा काली पई काली दिन समय तमा डिस्कस कने सेटा सजडा हेन क्वेश्चन सब असजडा ही पड़ी छी। ठीक अछि सो असजडा ही पड़ी छी। ठीक अछि आशा करछि समस्त टॉपिक बुझी पारिथिबो। जदि कहार किछि भी डाउट हुए निश्चित भाबरे मेसेज करिवो कमेंट करिवो निश्चित भाबरे वीडियो रे। जदि वीडियोटी भल लागितो निश्चित भाबरे लाइक करिकि जीवो। वीडियो को आप निजर सांग मानक सहित तथा निजर फ्रेंड्स सर्कल रे शेयर करियो भूली माने अन्य माने भी जेमति उपकृत होई परिबे सेति में निश्चित भाबरे शेयर करिवे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सारिवा सेशन एवं समस्त को शुभरात्रि। समस्त भलो आशा कर समस्त भलो थिबो। महाप्रभु जगन्नाथ समस्त भलो रखंतु। जय जगन्नाथ। सारिवा सेशन बंदे उत्कल जननी। कौन करिया पिले जी जेमती करिवो सेमती पाइबो आ कौन करिवा जी सेल्फिश हबो सेमती पाइबे भोगिबे। ठीक अछि किछि असुविधा नहीं। रेस्ट नियो। समस्त को शुभरात्रि। समस्त निश्चिंत भाबरे एगेन टॉपिक ऊपर टिके पढ़ा पढ़ी कर देओ। नेचुरल रिसोर्सेस आ गोटे पार्ट काल डिस्कशन करिबा। एगेन आ गोटे 50 मार्क डिस्कशन करिबा। समस्त प्रिपेयर हेकि थिबो। आहुरी पाखापाखि 2 टू 3टा क्लास 2टा क्लास गले तुम पूरा नेचुरल रिसोर्सेस पूरा क्लियर हो आ तुम दरकार पड़ो ना। जय जगन्नाथ समस्त को एगेन रेस्ट नियो। जाओ पढ़ी दियो टिके टॉपिक टे पढ़ी दी रेस्ट नियो। ठीक अछि ठीक अछि। देजी पहले शेयर करूची मते जे मेसेज कर दोछन म तांको सहित थ्योरी नोट छुडा शेयर कर दोची। क्विक रिवीजन नोट गुड़ाक सब ऑलरेडी शेयर हो सारी बहुत थर। ग्रुप रे शेयर करूनी जेहेतु सब पिला क्लास एक्टिव रहूना ग्रुप रे केवल मटेरियल्स कलेक्ट पे रही मुझे समस्त को दऊ ना जो मत मेसेज कर जो टॉपिक रिवीजन होची ता थ्योरी गुड़ाक दे दूची। ठीक अच्छे सारी सेशन में धन्यवाद।